से ग्रोसरीज और मिल्क लेने जाना पड़ता है बिकॉज इवनिंग में मिल्क ख़त्म हो जाता है एंड शॉप्स भी जल्दी बंद हो जाती है. So during this time of the day, I usually work for my internship projects and team meetings. Apart from that, a couple of assignments that I am getting from college and a few open source contributions. So this is the time during the day which I invest in lots of work. And apart from that, I usually spend time reading some good novels or books that are either based on fiction or autobiographies. Right now, I'm reading Gates, which is the autobiography of Bill Gates, and this is how I usually spend my days right now during COVID 19.
So now it's almost 10 a.m. and I'm ready for the first class of the day, which is Advanced Algorithms. So finally done with first class of the day. It was a lot of fun. So I'm lucky that I have Apple Pencil with iPad, so it is much more smooth experience. But our professors are using like Windows tablet, so their handwriting is not as good as mine, so I'm proud of it. And other than that, I noticed that most of the students forgot to mute their mic, so I could listen to the noise in their house, like dogs barking, yeah, kids crying, etc. तो मज़ा आया ये भी सुन के. And there are so many memes that some professors accidentally expose their bookmarks and history, but that doesn't happen in real life. So now I've come outside to get started with my master's project defense presentation. It's for cybersecurity, so that like if this project goes well, then they will declare that I have completed my project and I can finally graduate. If they think that it's not perfect, then I have to wait till I finish the project and then I will officially graduate as a master's student. Let's see what happens. Hi, Professor. Let me turn on my video. Yeah, but I think it could be like 2 to 30. That's what I thought, because I had sent him like an invite 1 year, accepted it. So I just got done with my master's defense presentation and honestly it didn't go well. मैं मतलब पिछले 9 महीने से same project पे काम कर रहा था, so it was for cybersecurity. But this pandemic, or you can say this power cut which happened like 1 month ago, screwed everything up. So a lot of people couldn't go out and they couldn't turn on my computer that was in the lab, and it got turned off due to pandemic and the teamwork credentials changed. So he said, like, even though I couldn't finish it till now, but he still wants something more out of it. He wants it to be more presentable and he wants like a hosted website, which I didn't do it. I just made like a data studio. I mean, I cannot explain you, but I can just tell you that I made something which wasn't the best solution. So he wants the best solution, even though I have 3 more days. Let's see. I'll try my best. I'll try my best to finish it by the weekend. हाय नमन, सच में मेरी MB1 हो गई. तुझे पता है कि तुझे पता है कि मतलब SQL सर्वर होस्ट करके क्लाइंट से कैसे कनेक्ट करते हैं? हम जल्दी तो नहीं सो रहा, मतलब 1-1.5 बजे तक तो जाग ही रहा हूँ मिनिमम. अच्छा, नहीं फिर जल्दी सो रहा हूँ, ठीक है. Oh my god. But anyways, all the best. करते हैं, ठीक है? Okay, bye. But I can tell you about an announcement. So Georgia's governor was the first governor in the US to announce that lockdown is over. So pretty much he opened restaurants and also like barbershops. But I was shocked to see that even movie theaters have been opened. So that was the most shocking part. क्योंकि मतलब इससे आइडिया ही लग रहा था कि पहले आप बार्बर जाओ, बाल कटवाओ, फिर उसके बाद
थिएटर जाओ और सब जगह कोरोना फैला दो. सो इट वॉज प्रीटी अनबिलीवेबल. बट अदरवाइज मैं ये देख रहा था कि जॉर्जिया के गवर्नर से इंस्पायर होके साउथ कैरोलिना, टेनेसी एंड बाकी गवर्नर्स ने भी लॉकडाउन ख़त्म कर दिया. आई मीन यू कैन से दैट रिस्ट्रिक्शंस कम कर दी, बट लाइक इट वॉजेंट अ गुड पार्ट. उसके कारण 50,000 पटिशन्स हुए थे इन जॉर्जिया सेइंग दैट कि लॉकडाउन वापस आ जाना चाहिए, पर किसी ने सुनी अभी भी. मतलब लोग थिएटर्स जा सकते हैं. So इस कारण आई हैव पर्सनली सीन दैट पीपल आर नॉट मच सीरियस अबाउट कोरोना इन जॉर्जिया. एटलीस्ट अगर आप न्यूयॉर्क में देखोगे शायद लोग ज़्यादा सीरियस हो, बट एटलीस्ट इन जॉर्जिया लोगों को इतनी परवाह नहीं है क्योंकि यहाँ पे केसेस कम है और लॉकडाउन गवर्नर ने ख़त्म कर दिया है. तो जब लॉकडाउन नहीं भी थे ना तब भी मतलब लोग इतने मतलब सीरियस नहीं थे. आई कैन सी दैट देयर इज़ अ टेनिस कोर्ट एंड बास्केटबॉल ग्राउंड इन फ्रंट ऑफ मी. तो वहाँ पे पहले भी लोग खेलने आते थे, अभी भी खेलने आते हैं. वो भी 1-2 नहीं, 8-10 के ग्रुप्स में लाइक 6-7 कार्स लगी होती थी. सो इट इज़ लाइक अनबिलीवेबल कि इंडिया में लोग ज़्यादा सीरियस हैं एज़ कम्पेयर टू यहाँ पे. So now let's talk a little bit about the grocery situation. तो मैंने न्यूज़ पढ़ी थी that in Bombay, Delhi, there were huge lines to buy alcohol क्योंकि उन्होंने एक ही दिन के लिए शॉप खोली थी. But that's not the case here. First of all कि अगर आपको अल्कोहल ख़रीदनी हो आप पहले भी ख़रीद सकते थे, अब भी ख़रीद सकते हो. It was available in Publix या फिर you can say grocery shops. And पहले यहाँ पे लिमिट होती थी कि आप एक ही मिल्क ख़रीद सकते हो इन 1 ग्रोसरी स्टोर. फिर हौली हौली 2 की लिमिट हो गई एंड कुछ स्टोर्स में 4 की हो गई है. सो डिपेंडिंग ऑन आपकी कितनी फैमिली बड़ी है, आप उतने मतलब जितने मर्जी मिल्क खरीद सकते हो. कि हमारी यहाँ पे फैमिली बड़ी है तो हमें यूजुअली चाहिए होता है लाइक 4 गैलन्स ऑफ मिल्क. सो दैट्स व्हाई इट वाज इंपॉर्टेंट. एंड अदर दैन दैट देयर वाज रिस्ट्रिक्शन. देयर इज़ एक्चुअली रिस्ट्रिक्शन नाउ इन कॉस्को, पब्लिक्स कि आपको मास्क पहन के ही अंदर जाने देंगे, नहीं तो यू कैन नॉट एंटर. बट इंडियन स्टोर्स में लाइक पटेल ब्रदर्स वहाँ पे ये रिस्ट्रिक्शन नहीं है. सो इट वेरीज. बट ओवरऑल वो कर रहे हैं कि अगर किसी को भी मतलब आना है तो मास्क पहन के ही आए. पर मैंने यहाँ पे नोटिस किया इवन द डिलीवरी गाय वाज़न्ट लाइक वेयरिंग अ मास्क व्हेन ही केम टू डिलीवर माई आईपैड, और नॉट इवन ग्लव्स. आईपैड, उसके बाद आईपैड का जो केस आया था. सो प्रीटी मच मोस्ट ऑफ 99% ऑफ दिस टाइम लाइक कोई भी मास्क नहीं पहन रहा, बिकॉज if the president is not willing to wear, why would people wear? And also this is like a Republican state, so it kind of makes sense. एंड अनदर डिफरेंस कि मैंने नोटिस किया इंडिया में उसी वक्त डिलीवरी ऐप्स बंद हो गई थी. फॉर एग्जांपल स्विगी एंड जोमेटो एक्सेट्रा. बट यूएस में नहीं हुई. यूएस में इनफैक्ट डिस्काउंट भी दे रहे हैं, मतलब क्योंकि इतनी देर से शॉप्स मतलब वो डिलीवरी ऐप्स चल नहीं रही, रेस्टोरेंट्स चल नहीं रहे कि ज़्यादा लोग नहीं ऑर्डर कर रहे. कुछ लोग कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल मेरे मतलब रूममेट्स कर रहे हैं वहाँ पे. बट लाइक जहाँ पे फैमिली है, जहाँ पे बना सकते खाना, वाई टू लाइक ऑर्डर एंड रिस्क योर सेल्फ ऑफ गेटिंग इन्फेक्टेड. सो दैट्स वाई कई लोग नहीं कर रहे हैं इन घरों में. सो दैट्स वाई लाइक वो बहुत बड़ा डिस्काउंट दे रहे हैं. मेरे पास शायद $20 पड़े हैं अपने DoorDash अकाउंट में, सो आई कैन ऑर्डर फूड देयर, बट लाइक वी डोंट हैव टू. तो इस कारण ये चीज़ अच्छी है कि यहाँ पे रन कर रहा है. पर इंडिया में तो उसी वक्त पिछले मतलब देखा से 1-1.5 महीने जैसे ही लॉकडाउन हुआ था तो फूड ऐप्स तक नहीं चल रही थी, सिर्फ लाइक केमिस्ट शॉप चल रही थी. बट यहाँ पे टेक्निकली ज़्यादा कुछ अफेक्ट नहीं हुआ. ओनली द स्मॉल बिजनेसेस हैव बीन अफेक्टेड. एंड अभी न्यूज़ आई है दैट 35 मिलियन अमेरिकन्स हैव लॉस्ट अ जॉब, एंड दैट इज़ वे मोर देन लाइक द 2008 रिसेशन. तो डिप्रेशन जब हुआ था 1929 में, तब 25% लोगों ने जॉब खो दी थी, 25% अनएम्प्लॉयमेंट रेट था, एंड अभी है 13.5%. सो इट इज़ स्टिल सो ह्यूज. एंड यूके में ऐसा केस नहीं है बिकॉज लाइक यूएस में थोड़ा टाइम डिले है. लाइक स्मॉल बिजनेसेस आर गेटिंग शट डाउन, उन्हें फंडिंग टाइम पे नहीं मिल रही, पर यूके में मिल रही है. सो दैट्स वाई थिंग्स आर लिटिल बेटर इन यूके एज़ कम्पेयर टू इन द यूएस.